So good afternoon, one and all. So I'm here with a new topic today. So we are going to learn about understanding quadrilaterals, as you can see over here. So today we are going to learn quadrilaterals. So let's get started with this topic. So firstly, we should know what is a plane surface. Plane surface. So plane surface क्या होता है? So plane surface, it's like a plain sheet. So you can also give an example of a paper. Paper is a model for a plane surface. You can take some examples like sheets, blackboard, etc. Everything that is plain is known as a plane surface. So let's take some examples of plane surface. So it could be a blackboard, and yeah, even a whiteboard is also a plain surface. And you can take a sheet which is very plain, and there are so many examples. So these are few examples of a plain surface. Now we are just moving towards the second part, that is plane curve. So we need to know what is a plane curve. सो प्लेन कर्व क्या होता है? सो कर्व से तो आपको ये पता चल रहा होगा कि कर्व इज अ लाइन दैट इज कर्व इन शेप. तो आपके कर्व्स ऐसे हो सकते हैं. लेट मी शो यू. इट कैन बी एनीथिंग, अ कर्व लाइक दिस, like this, like this. These are all called a curve. But here in understanding quadrilaterals, we have to make sure that when we join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single pencil, that is known as a plane curve. So जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में पेंसिल है और इस पेंसिल से मैं एक कर्व ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं कर्व एट वन गो ड्रॉ कर रही हूँ without moving the pencil anywhere. So that can be a curve, plane curve. Look at this. I'm not moving the pencil anywhere. So it's an example of plane curve. You're just not moving anything anywhere. That gives you a plane curve. And now, let me give you one more example. For example, there are 3 dots. And if we would like to join the dots, so we don't have to move our pencil, we are just joining the dots with. So likewise we can also say this as it's a plane curve. So आपको दो चीज़ें अभी तक मालूम चली. The first one was what is a plane surface. So plane surface, anything that is very plain, उसे हम कहेंगे प्लेन सरफेस. उसके एग्जांपल्स हमने देखे, ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, कोई भी शीट जो काफ़ी प्लेन हो. और प्लेन कर्व, सो विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल एनीवेयर यू ड्रॉ अ कर्व, उसे हम कहते हैं अ प्लेन कर्व. चलिए अब हम चलते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की तरफ. देख लीजिए. सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है प्लेन सरफेस का. लेट्स रीड दैट एंड उससे हम देखेंगे कि हमने क्या समझा. सो यू नो दैट द पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन कर्व. Yes, a paper is a model of a plane surface, and when you join a number of points without lifting your pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, you get a plane curve. So as I told you, if we take a pencil and we are not moving the pencil anywhere, so we are just drawing the curve. ओके, वी आर नॉट लिफ्टिंग द पेंसिल. लिफ्टिंग का मतलब होता है जैसे कि आप यहाँ पे पेंसिल को लिफ्ट कर रहे हैं. अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे कर्व्स अपनी पेंसिल को लिफ्ट करके ड्रॉ किया है. सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ प्लेन कर्व.
plane curve is simply joining a number of points without lifting the pencil. As I told you, if we can just make some points, let's see, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना देते हैं एंड इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, तो हम अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब उठाएंगे नहीं, बस इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते रहेंगे. सो इसे हम कहेंगे प्लेन कर्व. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेबल. सो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही होगी जहाँ पे आपके फ्यू फिगर्स हैं. उस फिगर्स पे आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज this one, second is again, third is, and the fourth is. So now we, and these are the types, so we are just going to now match them with the correct figure. So the first one is for simple closed curve. So आपका जो simple closed curve कहाँ पे दिख रहा है, जो चारों तरफ से close है, वो है हमारा let me just change the color of the pencil. So हमारा जो closed curve दिख रहा है वो है हमारा circle. So हमारा circle हो गया एक simple closed curve. अब ये जो V shape में जो दिख रहा है, जो first वाला है, वो क्या है? So वो है हमारा simple curve that is not closed. So ये तो curve इसे हम कहेंगे ही, but ये close नहीं है, मतलब कहीं भी चारों तरफ से बंद नहीं है, तो इसे हम कहेंगे simple curve that is not closed. Now next move to the second one. So second one में आपको दिख रहा होगा R like structure है. So ये जो R like structure है, ये curve तो है, but it's not a simple curve. That is the reason we are going to join to the D, because it's not a simple curve, though it is a curve, but it's not a simple curve. Now fourth one. So here you can just find there are two closed curves. That is not simple because it's in the form of lines. Can you see here? These lines are just joining them together to make them close. So it's a closed curve that is not a simple one. So till here we understood what is a curve and what is a plane surface. अब हम पहुँचेंगे next की तरफ, जो कि है हमारा polygons. So I think you might have learned about polygons in your previous classes. So let's start with the first one. So चलिए चलते हैं polygon की तरफ. So what is a polygon? So polygon is a simple closed curve made up of only line segments. So ये एक simple closed curve है जो कि आपका सिर्फ line segment से बनता है. So curves that are polygons. So these are the curves that are polygons. You can just look at this. These are called polygons, and the curves that are not polygons are over here. See? This one, and this one. Now we will just move on to the next one. So it was quite simple. You can just look at the diagram and make out the curves that are polygons and the curves that are not polygon. Now we are just moving to the classification of polygons. So we are just going to see how polygons are classified. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे polygons हैं. पहला है triangle. So triangle की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारा triangle है. It looks like so. So it has got 3 sides, 1, 2, and 3. So as you can see, the number of sides or vertices are 3. Now we will move to the quadrilateral and let's check how many sides do this quadrilateral have. So we will just change the color of the pencil so that you can see clearly. So यहाँ पे हमारा ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया थर्ड साइड एंड ये हो गया फोर्थ साइड. सो आपके क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 4 साइड्स. ट्रायंगल्स में होते हैं 3 sides. I'm sorry, 3 sides. Now we will move to
the next polygon, that is pentagon. Let's see pentagon has how many sides. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 साइड्स हैं. So 5 sides है, that is the reason it is a pentagon. So you have to learn this because this is really important. अगर आपको पेंट नेम कहीं पर भी सुनाई देगा, that means it has got 5 sides. Now let's move to the hexagon. So आपको हेक्सा नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हेक्सागन के कितने साइड्स होने चाहिए. सो हेक्सा मीन्स 6. सो हेक्सागन के 6 साइड्स हैं. तो चलिए हम देख लेते हैं. यहाँ पे पहला है, I'll just put a dot, 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 and 3. सो टोटल हमारे कितने हो गए? 6. So there are 6 sides of a hexagon. तो hexagon के कितने sides होते हैं? Hexagon के 6 sides होते हैं. Now we are just moving to the next one, next polygon, that is heptagon. So heptagon में हम देखेंगे कितने sides हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. So we have got 7 over here. So it has got 7 vertices, or you can even call it as sides. Now let's move to the octagon. So octagon, the word octa means it has got 8 sides. So that is the reason octagon has 8 sides. And let's check. So 1 2 3 4 5 6 7 8. सो जैसे कि हम साइड्स काउंट करके हमें ये पता लगता है कि ऑक्टागन के 8 साइड होते हैं. अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे नोनागन पे. नोनागन मीन्स इट हैज़ गॉट 9 साइड्स. सो अगेन देखते हैं कैसे 9 साइड्स हैं इसके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it has got 9 sides. So जो आप ये vertices and edges को काउंट करके आप पता लगा सकते हैं कि इसके कितने sides हैं. So I hope you are clear till here. And हमारा जो last polygon है वो है हमारा decagon. So decagon के 10 sides होते हैं. And again you need to just count and check how many sides are there. So let's see. यहाँ पे हमारे हो गए, यहाँ से शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. इसके हमारे टोटल कितने साइड्स हो गए? There are 10 sides in a decagon. अब हम चलते हैं डायगोनल्स की तरफ. सो आज हम लर्न करेंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन consecutive vertices of a polygon. So यहाँ पे आप देख रहे होंगे it's a quadrilateral. It has got P, Q, R and S. The quadrilateral P, Q, R, S, जिसमें आपका जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि consecutive points क्या होते हैं. Consecutive points वो होते हैं जो आस पास होते हैं, जैसे PQ, ओके, RQ, SP एंड SR. बट यहाँ पे बोला गया है, डायगोनल के बारे में बताया गया है कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. सो जो काफ़ी दूर हैं, आप देख सकते हैं Q से S काफ़ी दूर है, P से R काफ़ी दूर है. सो जब हम
S से Q को ज्वाइन करेंगे एंड R से P को ज्वाइन करेंगे, इसे हम कहेंगे डायगोनल। सो यहाँ पे हमारे कितने डायगोनल्स हैं? 2, एक है SQ एंड एक है PR. So there are 2 diagonals over here. The first one is SQ and the second one is PR. So I think you understood really well about this, the first one. अब हम यहाँ पे डायगोनल सर्च करते हैं कि हमारे डायगोनल्स कौन कौन से होंगे. सो देयर आर सो मेनी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, EC. यहाँ पे हमें क्या दिख गया? एक डायगोनल दिख गया, वो है EC. एंड दूसरा हमें दिख रहा है AD. AD is another diagonal. एंड देन नेक्स्ट हम चलते हैं. एक तो हमें मिल गया AD, फिर EC, फिर EB. दिख रहा है आपको? E और B. So EB is another diagonal for this diagram. So it is EB, and the last one that we can see over here is C and A. So you can even call it as AC or CA. So AC is another diagonal that you can see over here. So all these are the diagonals that are joining these non-consecutive points, EC, AD, DB. DB is also a diagonal. So let me just write over here. So DB is also a diagonal. DB and then AC and then EB. EB is also a diagonal and EC is also a diagonal. So I hope you are clear over here. So हम इस तरीके से हमें पता लगता है कि डायगोनल्स कौन से होते हैं. नाउ अब हम मूव ऑन करेंगे कि नेक्स्ट पे. So let's move to the next topic. Then the next topic that we see here is ओके आपके यहाँ पे 2 फिगर्स दिख रहे होंगे. चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे 2 फिगर दिख रहे हैं. तो इस फिगर को जो फर्स्ट वन को कहेंगे इंटीरियर. सो ये अंदर का पार्ट है. सो जो भी शेडेड ग्रे है वो इनसाइड है. सो उसे हम इंटीरियर कहेंगे. और जो ये ग्रे पार्ट जो शेडेड आउटसाइड है, इसके चारों तरफ मतलब फिगर के चारों ओर जो होता है, जो बाउंड्री होती है, उसे हम एक्सटीरियर पार्ट कहेंगे. और इंटीरियर पार्ट बोलेंगे किसी भी फिगर के अंदर की बाउंड्री. So I hope you are clear what is interior and what is exterior. Now we are just moving to the convex and concave polygons. So there are 2 types of polygons as you can see over there. So यहाँ पे जो convex है, इसमें आपके जो डायगोनल्स होंगे, जितने भी डायगोनल्स होंगे, वो इट लाइज इनसाइड. जैसे कि मैं बना रही हूँ. सो आप ऐसे these all we can make. These are the diagonals. So यहाँ पे भी हम diagonals बना सकते हैं. Sorry, it went. Okay, so all these we can make. So जब हम diagonal inside बना सकते हैं, उसे हम कहेंगे convex polygons, जिसके diagonals अंदर हम बना सकते हैं आराम से. और concave polygons वो होते हैं जिसके हम diagonals outside बना सकते हैं. सो ये जैसे मैंने डॉटेड लाइन से आपको शो किया है. सो इस तरीके से हम यहाँ पे डायगोनल्स बना सकते हैं इसमें. और जैसे कि यहाँ पे भी आप आउटसाइड डायगोनल्स बना सकते हैं. अगेन इधर पे भी आप बना सकते हैं. सो दीज आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन्स. सो या आई होप यू आर क्लियर टिल हियर क्या होता है कॉनकेव एंड क्या होता है कॉन्वेक्स. अब हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की ओर. सो आपका दूसरा टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन. सो क्या होता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन? सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे regular polygons has equal sides. Let's read this. A regular polygon is both equiangular and equilateral. For example, a square has sides of equal length and equal
measure, that is y. So आपके जितने भी regular polygon होंगे उनके sides equal होंगे और उनके measures equal होंगे, as you can see here. देखिए इसका मतलब होता है these are equal, ये और ये equal है and ये भी equal है, so ये तीनों sides equal हैं, that is the reason it's a regular polygon. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी आपका regular polygon हो गया क्योंकि इसके भी sides equal हैं since it is a square. Now let's move on to the next. तो हम बात करते हैं irregular polygon की. तो irregular polygons, it does not have all the sides equal. हो सकते हैं इसके कुछ sides equal, but all the sides are not equal. जैसे कि यहाँ के opposite sides इसके equal है and इसके opposite sides equal है, but ये सारे तो equal नहीं हैं, तो इसे हम कहेंगे regular polygon. Same as it is, इसके भी आप यहाँ पे देखेंगे ये भी साइड इक्वल नहीं है, ये भी डिफरेंट है एंड ये भी डिफरेंट है, सो ये तीनों के साइड्स डिफरेंट है, दैट इज द रीजन इट्स इर्रेगुलर पॉलीगन. सो रेगुलर और इर्रेगुलर में अब आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होता है रेगुलर पॉलीगन और क्या होता है इर्रेगुलर पॉलीगन. नाउ वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे few more example they have given. So you can see note यहाँ पे क्या लिखा, use of this or this indicates segments of equal length. So आप देखते हैं हम यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी, ये जो lines दिख रहे हैं that means these are equal, these all are equal to each other. So ये दोनों figures रेगुलर पॉलीगन्स के अंडर में आएंगे. एंड जब हम यहाँ पे देखेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है एंड ये साइड इक्वल है, बट ये वाला साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, दैट इज द रीजन इट इज इर्रेगुलर पॉलीगन. जिस तरीके से यहाँ पे भी ये दोनों तो इक्वल है, बट व्हाट अबाउट दिस, इट्स नॉट इक्वल टू दीज टू, दैट इज द रीजन ये भी हमारा polygon irregular हुआ. So I hope you are clear till here. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी. So as I think we have learnt about what is sum of angles of a triangle. So यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें आपके it's a quadrilateral and it has got two triangles inside. So take any quadrilateral and say ABCD figure, okay, 3.4, divide it into two equal quadrilaterals. By drawing a diagonal you get 6 angles. Yes, we get 6 angles and the angles are over here, the first one, this is the second one, this is the third one, this is the fourth one, and this is the fifth, and this is the sixth. So we have got 6 angles. Now use of angle sum property of a triangle and argue how the sum of measures of angle A, angle B, and angle C and angle D amounts to 360. So अब हमें इसे फाइंड आउट करना है कि ये कैसे 360 होता है. तो I'll teach you today how to find out. So let's move on to this whiteboard. So हम similarly डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने देखा था. सो ओके, और इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ओ आई एम सॉरी, ओके चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं इसे.
ओके, तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब हम इसे हाफ पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, बीच से एक लाइन खींचनी है। और जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये पार्ट था हमारा सी, ये पार्ट था हमारा बी, ये पार्ट हमारा था डी, एंड दिस पार्ट इज ए। एंड इसके एंगल्स भी हम लिख लेंगे अब। सो पहला जो एंगल है हमारा 1 है, दिस इज 1, एंड दिस इज 2, this is 3, and this is 4, this is 5, and this is 6. So हमारे हमने 6 angles बना दिए यहाँ पे, and let's just make this. So these are the angles that we have got over here. Okay, so आपको clearly दिख रहा होगा angle A, सो हाँ यहाँ पे हमारा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। उसके अंदर हमारे एंगल 1, 4, 6, 5, 2 and 3. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles over here, and we have divided these into 2 triangles, and we are just going to make 2 triangles over here now. This is the first triangle, and this is the second triangle that we can see over here. And now अब हम लेते हैं पेंसिल। अब यहाँ से हम एंगल बनाना शुरू करेंगे। दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 2, एंड दिस इज एंगल 1। हम लेते हैं एंगल 4, एंड देन एंगल 5, and this is angle 6. So I hope I'm clear over here. जैसे आप देख रहे होंगे हमने एंगल्स भी बना दिए सबके। Now let's move. So जैसे कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपका है तो फर्स्ट में जो आपका है एंगल 1 है, तो पहला जो है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 plus angle 3. So you know sum of the angles of a triangle is 180 degrees. So we are just going to write that. And let's move to the second triangle. So second triangle may we have some angles. Those are angle 4 plus angle 5 plus angle 6. So the same way here also sum of the angles of a triangle is 180 degrees. So here also we will get 180 degrees. And when we add them together, when we add all the angles together, so we will get 180 plus 180. That will give us 360. So sum of the angles of a quadrilateral is 360. So I hope I'm clear over here. So let's move to the textbook now. Let's open this. So आपको ये समझ में आ गया, sum of the angles of a quadrilateral is 360. Now we will move to the next. So यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, इस एक्सरसाइज को चलिए हम करते हैं।
So here I can see there are 8 figures, and let's start with the first one. So what do you think the first figure is? Yes. Okay. So let me tell you what's the first figure is. The first figure is, here we are given with some options: simple curve, simple closed curve, polygon, convex, polygon और concave. So यहाँ पे हमें दिख रहा है जो first वाला figure है वो simple curve है. So we'll just put A here because A is the answer for the first one. Now let's move to the B. So B is also a simple closed figure जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. So it's also A. Now we are moving to the circle now. So what do you think? A circle is a simple closed figure? Yes. Yes, it's a simple closed figure. So it can also be a simple closed figure. Now we are going to move to the star. So star से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने polygons के बारे में कुछ पढ़ा था. So yes, it's a polygon. So it's a polygon. So polygon is C. And yes, there's one more thing. It's also called as convex polygon. So D also comes over here. Now let's look at the first figure again. So first figure में आपको ये भी polygon type का दिख रहा होगा. So this is also a polygon, but it's a concave polygon. It's a concave polygon. And yes, now concave में हमने ये भी पढ़ा था कि स्टार भी एक पॉलीगन है, एंड इट्स अ कॉन्केव, इट्स अगेन अ कॉन्केव पॉलीगन. क्योंकि इस स्टार के अंदर अंदर हम बना सकते हैं डायगोनल्स, दैट इज द रीजन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ फिगर. सो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फिफ्थ फिगर भी एक कर्व है, बट इट्स अ क्लोज्ड वन. सो ये हमारा आ जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व. सो हम इसे बी पुट करेंगे. नाउ it looks like a capsule, so it's also a simple closed curve. Now let's move on to this one. This is also a simple closed curve. अब जो हमने पढ़ा वो हमने यहाँ पे देख लिया. मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन. तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन के मेजर करेंगे. So let's move to this topic. So let's see this. One question, one example over here. So यहाँ पे आपको एक quadrilateral दिख रहा होगा, और इस quadrilateral में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So as we know, the first one is 90 degrees, the second one is 50 degrees, and the third angle is 110. We need to find x. So we know
sum of the angles of a quadrilateral is 360 degrees. So we will do x plus 90 degrees plus 50 degrees plus 110 degrees is equal to 360. Now we'll add them together, and when we add them together we'll get x plus 250, and then we will get x is equals to 110. So the value of x here we got is 110. So I hope you're clear over here, like how to find the exterior angle of a quadrilateral. And let's move to another question. So यहाँ पे आपको एक question है जो थोड़ा सा different है, वो हम उस पे चले जाते हैं और देखते हैं इसमें है क्या. So find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has 45-degree measure. So we know total measure of an exterior angle is 360 degree, and इसमें जो कि आपको दिया हुआ है each exterior angle has the measure of 45. So the number of exterior angle कितने होंगे? 360 divided by 45, that will give you 8. So it has got 8 sides. So this polygon has got 8 sides, and I told you a polygon that has 8 sides is known as octagon. So I hope you are clear over here. Now we will move to the next exercise. Your next exercise is exercise 3.2. तो इसमें हमें exterior angle find out करने हैं, तो let's see how we can find out the exterior angle. So जो पहला क्वेश्चन है, हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. So let's get started with the first one. We need to find the value of x. So पहला एंगल आपको दिया गया है 125, दूसरा भी 125 दिया गया है, और तीसरा आपको क्या दिया गया है? x. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम x को कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, नहीं तो x एज इट इज लिख सकते हैं. So let's start. So 125 let me write 120 here, 125 degrees plus, let's take that x is equal to 180 degrees. So as we know, it looks like a triangle, so sum of the angles of a triangle is 180 degrees. So I hope you are clear over here. So पहला तो हमें पता चल गया है. So हम अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्रीज, जो कि आपका आंसर आएगा 55 degrees. So I hope you are clear over here. इसका आंसर है हमारा 55 degrees x. अब हमने तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू, ये वाली. ठीक है, अब हम देखेंगे as it is forming a linear pair, so we have to take another alphabet, that is 125 plus n is equals to 180. so n की वैल्यू भी 55 आएगी.
सो दोनों की वैल्यू 55 आएगी. तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. So exterior angle will be 55 plus 55. That will give you 110. So I hope you are clear over here. हमने यहाँ पे x इसको माना था, ये वाले को, एंड हमने यहाँ पे आपको एक और एंगल दिख रहा होगा नीचे की तरफ. इस तरफ पे ये वाला, ये हमने इसे n लिया था. तो अब इन दोनों को हमने फाइंड आउट किया, तो हमें कितना आया 55 फॉर द फर्स्ट वन एंड 55 अगेन फॉर द सेकेंड वन. सो वी गॉट 110 because sum of the opposite interior angle क्या होते हैं, is equals to exterior angle. So ये दोनों की जो वैल्यू आई है 110 is equals to this. So हमारी x की वैल्यू हो गई 110. So I hope you are clear with this. So आज के सेशन में हमने ये लर्न किया कि डायगोनल्स क्या होते हैं, प्लेन सरफेस क्या होता है, एंड हमने ये लर्न किया कि सिंपल कर्व कैसे होते हैं, क्लोज्ड कर्व कैसे होते हैं, पॉलीगन्स कैसे होते हैं. There are different types of polygons. Those are triangles, quadrilaterals, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon. So these are all, and decagon. All these are the types of polygons. And diagonal में हमने ये देखा कि diagonal is a line segment. It connects two non-consecutive points, I mean vertices. And हमने देखा क्या होते हैं irregular and क्या होते हैं regular polygons. So and angle sum properties देखी. So I hope you liked the session. So this was all from my side, and now I'm going to end the session. So we have just completed till here. Let me just show you, and from the next session I'm just going to take kinds of quadrilaterals. So now I'm going to end the session. So I hope you like the session. Subscribe the channel. Please subscribe the channel. Bye bye.